point? Ma'am, that means outside this class product we cannot access that variables. It will give you warning. Warning. Okay. Warning. We will see. We will see. If you try to attempt to access any private data members outside the class, then it will give you not warning, it will give you error. Okay, that it is private, you cannot access it at this point. Like this. We will see whether it is giving the error or not. Let's check. So up to this, is it understood to all of you? Yes. Yes. Now, okay. Now display data. Display data, we want to display each attribute value of a product. So what we'll write? Cout product ID colon. What is that? Product ID. So product underscore ID. So product ID, which is in double quotation, that will be displayed on the screen as it is, but whose value will be displayed beside it? That product ID value. So here the product underscore IDs will be matched with the attributes name. So here I have written product underscore IDs, here also I have written product underscore ID. Then Cout. Wherever you feel that it is not understood, then you may ask over there directly. So Cout, then we wants to display name. So name. Then here I'll write name semicolon, and everywhere I have to put endl for the new line. That means it will print product ID is this, the new line, name is this, the new line. Like this we want to display. So in that case we have to use endl. Endl is the manipulators or new line or manipulators which is to be used for the new line, or you can go for /n. Next, Cout price. So price. And we can also do the Couts together by separating it with. We can. Means together with one Cout we want to print everything. Can we do that? Yes, we can do that. Like for example, I'm putting over here Cout price. Then I'll write endl. Then again insertion operator. Then I'll write quantity. So quantity equals to, then equals to 9. Quantity colon, then quantity, then again endl. Like this also you can write it. So first two I have written individually. Last two I have kept it as a cascading output statement. Is it clear? हम एंडल की जगह तो बैकस्लैश n भी लगा सकते हैं ना? हाँ, /n. तो एक हटा के मैं ये भी लिख देती हूँ /n, लेकिन उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है. ओके. आप लोग जैसे स्कैनएप में हम लोग डबल कोटेशन के अंदर ही /n देते थे, इसीलिए यहाँ पे भी वैसे ही. ठीक है. Now closing of the class. So the way we are closing the structure, we are closing the class. So closing bracket semicolon. Then the main function. Now in the main function, our first work is like in the structure. What is the first work in the main function? Declaring a variable. All the structure. Creating a structure variable. So here creating a class variable which is called object. Creating a class variable which is called object. So what is my class name? Product. So I'll write here product. Then variable name, let's say P. Then semicolon. So for the product P, I need to enter ID, name, price, quantity. For the product P, I need to display all those attribute value. So for P, I need to input. So for input, we have written get data function, and get data function is a member of class. If you want to access public member of a class through the object or the class variable, then we have to use the class variable name or the object P, dot operator, then
the public member function name. Is it clear? Under the Yes, public, ma'am. public, एक बार फिर से समझा दीजिए ना 38 लाइन. we can only use the declare the function, or we can do anything else. Not getting. I'm like in this program we have declared function under the public, so we can do anything other than like any operation or anything other than function also. जैसे कि And जैसे किसी चीज का आउटपुट निकालना, परसेंटेज, एवरेज, anything like that. हाँ, So, yes, you can make a different function and put it in the public. जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, yes. जैसे यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, देखेंगे. P dot get data. So get data function will be invoked for the product P, for the object P. मतलब मान के चलो कि P एक प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें get data function invoke किया, जिसमें उसी प्रोडक्ट का हमें ID, name, price, quantity एंटर करना है. तो we have to invoke get data function for the object P. Clear, class? Similarly, we will display. For the product, we want to display all the information. So what we will write here? For example, I'll write C out. I'll write product information. इसके बाद ही आएगा आप लोगों का display. तो P dot display data function we have written, so we will invoke display data function for the product P. So it will display all the information of the product P. Now ours is over. Next is return 0, then close it. So this is what we have to write as in class and object program. Is it clear to everyone? Hello. Yes, ma'am. Yes. Now let's run it. See, now it is asking you enter product ID, name, price, quantity. Okay. So what I have to enter? ID, name, price, quantity. So you can see how the output has came. Product information, product ID 34, name TV, price is 20,000, quantity is 5. Like this it has been displayed. Now let's say as someone has asked, some student has asked, if it is a private data member, can we access outside the class? I told you we cannot access. We cannot access private data member of a class outside the class. So outside the class, which function is there? Main function is there. So within the main function, let's go for accessing any product. So how to access? P dot. Any member you want to access, you have to use the object dot operator. Then next, I have to write, let's say product ID I want to access. So P dot product ID equals to, now it will give you error. What error it is giving? Read it out. Read out. Int product scope resolution product ID is private within the context. मतलब वो बोल रहा है कि product ID जो है वो product के अंदर private है. So you cannot access like this. P dot product ID equals to 105. You cannot access within the main function. In function main. Class, am I clear? Yes. Before the मैम अगर वो पब्लिक होता तो एक्सेस कर सकते. हाँ कर सकते हैं, करके देखते हैं. ma'am, before the object declaration, we don't have to write class. Before the object direction. अच्छा, do. here declaring. Yes, ma'am. We don't write class. Because you might have observed that whenever we are creating structure variable in C++, at that time I told you struct keyword is not required while creating structure variable in C++, but it is mandate in C, because we want to make a user defined type, and here class is
not required to create the class variable or the object, like to create the structure variable in C++. Okay, ma'am. Clear? Ma'am, if it's private and we are trying to create, do some operation on the particular, so suppose प्राइस को लेके कोई ऑपरेशन करना है मेन फंक्शन के अंदर और डेटा मेंबर प्राइवेट है, then how are we supposed to do it? नहीं कर सकते. We have to write a separate function for it. Okay. Inside the class. In separate function, yes, we have to include a separate function inside the class. Otherwise, फिर आपको you have to be very sound in pointer. Pointer create करके कैसे करके अंदर घुस के कर सकते हो, because pointer is there to access any memory location, because through pointer we are accessing address, है ना? तो मैम पॉइंटर से प्राइवेट डेटा मेंबर का भी मेमोरी लोकेशन कर सकते हैं. इसीलिए तो pointer concept is not there in Java, because whatever applications, websites or anything that we developed for real world application, we generally do in the Java. That's why pointer concept is not there. हम लोग लिखते थे प्रोडक्ट p इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, तो वो सी में सी प्लस यहाँ पे भी है. So वो जाएगा तुम्हारा डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में. Here we are creating static object. Static object means you are creating first the object. Static object is something different. Then when we'll go for dynamic memory allocation, there we will discuss about the new operator and all that. So if it is public, तो अच्छा मैम एक डाउट था, मतलब हम लोग जब नाम ले रहे हैं तब कैरेक्टर लेके नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर उसको मतलब अगर नाम के बीच में स्पेस दे दे तो वो मतलब उसका तो अब नहीं ले रहे, मतलब बाकी डायगोनल्स वो फिर अलग चीज है. फिर तुम लोग को बहुत सारे चीज पढ़ना होगा, गेट लाइन फंक्शन, रीड फंक्शन, तो तब बताएंगे. ठीक है, अभी तक मान के चलो कि स्पेस नहीं है. फिर जब वो सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ टू रीड इट. ओके. अब देखो मैंने इसको प्राइवेट पब्लिक कर दिया है, तो एक बार रन करेंगे. पब्लिक किया नहीं है, तो सारी चीजों को हमने पब्लिक कर दिया. अभी हम रन करेंगे. लेट्स रन इट. सी इट इज डूइंग. मान लो ये जो प्रोडक्ट आईडी है मैंने यहाँ से हटा के अच्छा स्टॉप प्रोग्राम. अच्छा ओके, मान लो यहाँ से हटा के हट ही नहीं रहा है, और आई विल रिमूव फ्रॉम हियर and I'll keep it here. Okay, and now I have made everything as the public. Attribute भी public है, मतलब fields are also public, data members are public, as well as member functions are also public. तो यहाँ पे क्या होगा? run. So it is running. Now I'll enter ID is 101. Then product name is TV. Then price is let's say 30,000. Then quantity is let's say 5. But you can see here in the display section, product information, you see product ID has been changed to 105 because what I entered 101, but it is showing 105. TV 30,005 because this line number 40 has executed after getData function. So the ID value has been changed from 101 to 105. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अगर ये गेट डाटा के पहले लिखते तो 101 ही डिस्प्ले होता था. हाँ ऑब्वियसली, ये तो ओवर रिटर्न वाला काम हुआ ना. यस मैम. ठीक, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ.
Ma'am, if you don't mention any access specifier, what it will be doing? If you don't mention anything, मान लो यहाँ से हम सारे हटा देते हैं, then I want to access product ID outside. You can see everything, get data and all that will becomes not accessible. मतलब वो क्या हो गया? Private by default. Private. तो यहाँ पे C++ में if you have not mentioned any access specifier, so by default it is private. तो ये जो जितने सारे access specifier हम लोग use कर रहे हैं within the class, all those access specifier can also use in structure in C++. Can also use in structure C++. But there, if access specifier is missing, that means by default those are public. Here in the class, if the access specifier is missing, then by default all the members becomes private. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या समझ में आया पहले बोलो? क्या समझ में आया? तो मैम अगर बाय चांस ऐसा कोई प्रोग्राम आया जिसमें हम लोग को मेन फंक्शन में मैंने मेंशन किया है कि मेन फंक्शन में ही कोई मॉडिफिकेशन करना है डेटा मेंबर के साथ, तो हम लोग तब पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, राइट? हाँ, और वरना हम लोग एक दूसरा फंक्शन बना के उसको करेंगे क्लास के अंदर। क्लास के अंदर ही डालेंगे, नहीं तो और कोई तरीका ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन द C++ प्रोग्राम वो बोल रहा है कि तुम्हें जो भी डाटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सारे के सारे तुम एक साथ एक ही जगह में डाल दो, ताकि वो जो डाटा है वो किसी और को एक्सेस ना हो, वही यूनिट का जो भी मेंबर है बस वही लोग एक्सेस करें. So that's why we are putting data and functions together into a single unit, which concept is called encapsulation, and that is being realized in the program with the form of class. Because in the class we are putting data and functions together. So if the question will be asked ki how do you realize encapsulation, then your answer is encapsulation means wrapping data and function together into a single unit, which can be realized in the C++ program using class. Because class के अंदर हम दोनों के दोनों को एक साथ डाल देते हैं. ठीक है? हेलो. यस मैम. तो अभी हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर. प्रोग्राम में क्या दिया गया है? Write a program to display message hello followed by your name on screen. So let's say here you start doing the program, then we will discuss one by one. So what is the program? Program is write a program to display or print hello, okay, hello with your name, but your name is to be within, your name has to be within yes class. You have to display hello with your name, but that name, for example my name,
but the name has to be displayed within double quotation. Got it, class? Hello. Yes, Huh. ma'am. So write down first program. Then what is the second one? Second one, can you write it? Yes. Create a class which store name, roll number, total marks of a student, input and display. You can also do this one. Third, modify the program to store mark in five subjects, calculate total marks and percentage of student and display it. Third, if you find difficulty, we will do it. But fourth one, you can do it. Input 10 complex number and display. 10 complex number means array of objects we will do. Okay. Up first and second you do it, then third, when we'll come to third, I'll discuss again. Am I clear? Yes. Ma'am, this first one we have to do with objects, classes. No. Not using class. Directly. Simply Direct use C++. Yes. Directly main function. Okay. Yes. Do it. Madam sir ଅଛନ୍ତି ତ? गुड मॉर्निंग मैडम मॉर्निंग मैडम ହଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଉ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। हाँ मैडम ହଁ।
Students doing or not? Yes, sir. Yes, sir. Second. Any difficulty? Any problem? Any difficulty? Not yet, sir. No, sir. Yes. Okay, carry on. Any difficulty you can ask. So in number 3, we have to find out the total marks and percentage of all 5 students or a student. हर एक का स्टूडेंट परसेंटेज निकालो. ठीक है सर. एक स्टूडेंट का 5 मार्क्स होगा, उसी 5 मार्क्स का परसेंटेज निकालो. और 5. So now we have to do first two questions, no? Yes. Okay, sir. सर मेरा फर्स्ट 3 हो गया. हो गया. गुड. इतना जल्दी कैसे हो गया? नहीं सर, हो गया. मतलब पहले किया था? नहीं अभी किया सर. कितना जल्दी हो गया? तो कितना स्पीड में टाइप कर रहे हो? नहीं मतलब So first दो हो गया. क्वेश्चन टू लगभग सेम है Yes, ना. sir. प्लीज First टाइम. ओनली कॉपी पेस्ट करके थोड़ा चेंज करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. The third question. ओके सर. नहीं हो सकता? Okay, ट्राई sir. करो. हो जाएगा ट्राई sir. करो. Try. जितना हो सकता Okay, है sir. करो. रोल नंबर 040. सर. तुम क्यों रिकॉर्ड सबमिट नहीं की? सर मैं आज गूगल क्लासरूम में सबमिट करो. लेट सबमिशन के लिए मार्क करता है. ओके सर. ओके. 1943 86 1943 198 198
669 दे आर एब्सेंट। ठीक है, Sir, यस बोलो क्या है? sir, fourth वाला ना run नहीं हो रहा है। क्यों? दिखाओ। फोर्थ में क्या करने के लिए बोला गया था? सर 10 कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट करने के लिए बोला था डिस्प्ले। आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशन किया, void क्लास में क्या था? कॉम्प्लेक्स सर क्या एरर दिखा रहा है या क्या हो रहा है? आउटपुट ही नहीं आ रहा है। मेन फंक्शन cfi डॉट गेट डाटा फंक्शन। डिस्प्ले कहाँ पे क्या है? सर इधर डिस्प्ले कॉल किया कहाँ पे? स्ट्रक्चर तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए ये वाला फंक्शन मैंने जो सिखाया था तो ऐसे किया। क्या? सर स्ट्रक्चर के बाहर कर रहा था फंक्शन, तो ऐसे तरह के। हाँ सर सब प्राइवेट है। प्राइवेट है ना तुम्हारा? जो तुम्हारा ये सॉरी सारा डाटा मेंबर्स प्राइवेट है ना? ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिक्लेयर किए हो? हम इधर अच्छा,
Okay, class. Sorry to interrupt you all. See, once you have done question number 1, 2, then you do the questions that I have posted in the chat box. Okay. In this lab, we will practice only basic C++ program. Class program just we have started because it is not covered in the theory class also. So just stop it over there by making 1 and 2. Then you switch over to the program that I have given in the chat box. Clear? Okay. Hello? Yes, ma'am. हाँ मैम मेरा 3 हो गया था तो वो उसको रहने देते हैं उस उतना तक। हाँ ठीक है जहां तक किए हो वहां पे करने के बाद ये 5 कर लो because it is covering the concepts of C, that is the conditional structures, then your conditional statements, looping statement and together and Okay. combination of both. So do it. Okay. Ma'am, for all these questions we have to create class and do it, or we can do it in the main function only. Ma'am, Sir, I think there is क्लास कॉन्सेप्ट यूज करके करो, क्योंकि तुम क्लास स्टार्ट हो गया है C++ में। सर क्लास नहीं हुआ है सर, सिंपली कर दिए। अच्छा ठीक है, sir ये वाला लेकिन सी आउट सीन लगा के करो। हाँ सीन सर, मतलब मैम बोली ना क्लास यूज मत करो, तुम्हारा क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, तो सिर्फ सिंपली करो। Can we use a factorial one with recursion? नो रिकर्सन बताया नहीं गया। But in C, sir, we did. Yeah, you have done, but in the question there is not mentioned, so you just do. Okay. If you can do, no problem. then तो 4 तक हो गया है, तो 5, 6 करें या फिर we will stop? सारा करो, सारा ये पूरा प्रोग्राम कब हुआ? जो क्वेश्चन दिया गया अभी मैम दिए हैं उसको करो। sir, then should I stop, sir? Yes. तो ये वाला थोड़ा देख लेते हो, आउटपुट नहीं आ रहा है। Sir, I think in line number 26 you should write C plus I dot get data. C plus I dot get data. Not written. 26. Why? Because he had created the pointer where not the no pointer thing is not there. So C plus I क्यों करेगा? हाँ। What happened in this program? What is happening? Ma'am, Is it showing error? Yes, ma'am. The output is. Just go to the beginning. Go to the beginning of the program. Hold it. मैम बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस नहीं हो सकता सब कुछ। हाँ प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पब्लिक है, फिर नीचे देखो गेट डाटा, नेक्स्ट चलो डिस्प्ले, नेक्स्ट क्लास क्लोज नहीं कियो बाबू, क्लोज नहीं किया मैम। लाइन नंबर कियो हाँ कियो, रुक जाओ, इंट में और एक क्लोज देना पड़ेगा। और एक क्लोज क्यों? अच्छा सुनो गेट डाटा का लिसन, लाइन नंबर 15 देखो, लाइन नंबर 15 दैट इज अ फंक्शन क्लोजिंग गिवन सेमीकोलन। यस, अब क्या है? मैम एक मिनट। नाउ इट इज शोइंग, आई थिंक सो। नो मैम, इट्स नॉट कमिंग। नॉट शोइंग, दिखाओ मेन फंक्शन। मैंने तो अभी देखा, रिजल्ट दिखा था। ठीक है, मेन फंक्शन दिखाओ। ci.getData, see out the complex numbers are, कितना एंटर करना है तुम्हें? 10 मैम। यस मैम। आई क्या है? कॉम्प्लेक्स 10 सही है। क्या कर रहे हो? रन कर दो। is working, it's because उसने कुछ give elements या ऐसे कुछ दिया नहीं है हमको, डायरेक्टली लिखो, रिटर्न 0 लिख दो, वो तो वार्निंग देना चाहिए। क्या बोल रहे हो?
आई थिंक उसमें डायरेक्टली इनपुट देना है, उसने कुछ हाँ message उसने, नहीं दिया है। बाबू तुम्हारा दिखाई लेकिन रहा है, इनपुट देना है तुम्हें ना, तुम्हें सी आउट नहीं लिखे हो, वो पूछ नहीं रहा है। No, अच्छा गेट डाटा no फंक्शन के अंदर prompting लिख दो, message. No prompting message. This is why you are not able to see whether it is. गेट डाटा, हाँ गेट डाटा फंक्शन के अंदर लिखो मतलब सी इनपुट आउट एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मैसेज डाल दो. और मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न 0 लिखो लास्ट में। ये कंप्लीट कर लो पहले। ओके मैम. सी आउट टी नहीं है। हाँ मैम लिख रहे हैं. हाँ कर लो। ठीक। और जैसे सर बोल रहे थे, सी इफ यू आर कंफर्टेबल विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, because some of you might have already learned in your 11th and 12th, if you want to do the programs that I have given in the chat box using class and object, go for it. Those are not familiar with class and object, they can directly write the main functions. Those want to use functions to perform these operations, go for it. Okay, so in this class this is just that you whatever C++ basics things are there, using that you have to write the program. But if you think that you are very sound in using other things, then also you can go for it. And we can't create class in each of the program, na? Like in the program. That's what I told already Whether a mentioned. given number is even or odd, so there is no. Yes, you can go for it. You can take a number in the class as an attribute, you write a function to check even and odd and call that function in the main. Why not? You can do it. You can do it. Yes, ma'am. That's what I told. If you're familiar with to how to do using class and object, go for it. If it is not, then leave it. Directly write the C++ program with the main functions. If he wants to use some of the functions, user defined function, also you can go for it. Madam, it will be better if they go for user-defined function because they are familiar. Sir, They should sir, be in familiar this with class, function. let them to explore. Let them to do by themselves. Yes. Only thing is that we have to write whether output is coming or not. Ma'am, the complex number output is coming. Came? Yes, ma'am. Ah, good. From mine Thank also. you. Good. And one thing, students, when you are using the variable names, you should do the variable names with your roll number, last 3-digit roll number, so that one cannot share the program and one cannot copy the program from other students. Okay. Make But, sir, make it last day I specific already individuals. submitted. Okay. Sir, Yes. sir, last day I already submitted the variable without roll number. नहीं, जो सबमिट हो गया, लेकिन अभी जो सबमिट करोगे या कर रहे हो, सारे तुम्हारा रोल नंबर, जैसे कि मैं INT A डिक्लेयर किया, A22 होना चाहिए मुझे, और किसी का A25 और किसका A27, लाइक दिस. ओके सर. ओके. सर लास्ट डे का प्लीज कंसीडर कर दीजिए. हाँ चलेगा. Yes. So instructions remind me one thing. Whatever program you are executing, also write those program in A4 size paper. Program with input output with the date. Okay. Because in the mid of the semester, again you have to go for offline classes. You have to join the campus. So at that time, it has been asked to you submit the lab record. So beforehand, you keep on preparing the way the lab assignments are given in the lab. Clear? Each of the program we have to write in a size paper. Yes, with input and output. With input and output. Your input should not be matched with others' input. Clear? And the ways are told that variable name has to be your name, the identifier name with the roll number to avoid copy and paste. I hope it is clear at this point. Good.
Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, what happened? Sir, I was asking if the lab record has to be handwritten or can we print it as well? No printing is allowed in offline mode. Whenever you are coming on offline mode, you have to submit handwritten papers, and the paper should be A4 size with 4 sides margin. One side of page you have to write your codes, and at the end of each assignment you have to write your roll number, name, or your branch, like this. And a new assignment should start with a fresh page. Okay, sir. Thank you. In one assignment, if there are 5 programs, you can continue 5 programs, but in second assignment should start with a fresh page, not continue from assignment 1. मतलब कोई पेज का बीच में असाइनमेंट 1 छूट गया, इसके बाद असाइनमेंट 2 इमीडिएटली स्टार्ट मत करना, इसके नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करो असाइनमेंट 2. Sir, can we use a practical copy for this? Yes. Okay, sir. Yes, sir. बोलो. एक फ्लैट फाइल होना चाहिए. फ्लैट फाइल में A4 साइज में पेपर में लिख के उसको स्टिच करके रखो. जब कॉलेज जाओगे उसी टाइम तुमको सबमिट करना पड़ेगा. Sir, I was saying नहीं सर, बोल रहा अगर A4 साइज का कॉपी में लिखे तो वो ज्यादा मतलब कंफर्टेबल होगा, तो उसके लिए बोल रहा था. उसमें लिख सकते हैं. A4 साइज पेपर में तुम्हें लिख के रिकॉर्ड डिपॉजिट करना है, और इसके बाद भी अगर तुम कॉपी में लिखना, क्या पेपर में ही लिखना या कॉपी में भी लिख सकते हैं, ये पूछ रहे हैं. कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन जब रिकॉर्ड सबमिट करोगे रिकॉर्ड कॉलेज में होगा. अगर तुम्हारे पास प्रोग्राम रखना चाहते हो तो कॉपी में लिख सकते हो, नहीं तो तुम्हारे प्रोग्राम को तुम्हारे मेल में भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबमिट करना पड़ेगा A4 साइज पेपर में. ओके सर. और सर आज के लैब के लिए क्या सिर्फ यही मतलब कौन से क्वेश्चंस देने हैं, मतलब ऐसा वो 3 क्वेश्चन जो दिया, जो फर्स्ट दिया गया 3 क्वेश्चन, इसके बाद मैम 5 क्वेश्चंस दिए हैं, वो मिला के 8 क्वेश्चंस हो गया. अगर 8 क्वेश्चन के बाद किसी बच्चे को दो बोला था मैम ने. हाँ 3 क्वेश्चन बोले थे, 1 2 आई थिंक 4 जो भी है. अगर कोई किसी का 4 क्वेश्चन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सबमिट कर सकते हो. इसके बाद जो 5 क्वेश्चंस दिए गया उसको भी सबमिट करो. अच्छा, मतलब लैब मैनुअल के बाद वाले क्वेश्चंस नहीं करना है, तो करना है जो क्वेश्चन दिया गया. हाँ मतलब लैब मैनुअल में तो और भी क्वेश्चंस है 4 के बाद, तो वो सब नहीं करना है. आज लैब के लिए नहीं हुआ है तो नेक्स्ट लैब में जब होगा तुम करोगे. ओह ठीक है सर. ठीक है. And it is very clear that your program should carry the identifier name with your roll number. Anyone having not writing this way, his mark will be 0, simply 0. And whenever you submit also in classroom in this way, identifier name with your roll number. Don't copy the program from others. सर वो क्लासरूम में वो डॉट सी फाइल में सबमिट करना है, फिर कोड को नोटपैड में कॉपी करके सबमिट कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट फाइल PDF बना लो, उसको करो, नहीं तो डॉट सी फाइल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर पिछले क्लास में मैं वो नोटपैड में कॉपी करके किया था. क्या चलेगा, लेकिन आउटपुट होना चाहिए. हाँ सर, उसमें ओनली कोड देने से कुछ नहीं होगा, आउटपुट होना चाहिए. सर उसमें तो मैंने केवल कोड दिया था. नहीं आउटपुट होना चाहिए. सर तो फिर रीसबमिट करूं या आपकी हर एक प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए. सर तो उसको रीसबमिट करना पड़ेगा. नेक्स्ट से करो. ठीक है सर.
Anybody completed? How many programs you have completed? Basu? मैम लास्ट जो दिए थे उसमें से 4 हो गए और मैम ने जो नए दिए हैं उनमें से मैम फर्स्ट अभी तुरंत बनाना शुरू किया। Okay. मैम लास्ट जो दिए थे असाइनमेंट 2 वाले में से Yes, गौरव। हाँ बोला बासु। यस मैम लास्ट वाले जो मैम ने बोला असाइनमेंट जिसको नहीं करना असाइनमेंट 2 में से उनमें से मैम 4 क्वेश्चंस कर लिए थे तो अभी तुरंत उसको कंप्लीट किए तो फिर अब नेक्स्ट ठीक है। मैम मैंने असाइनमेंट से 3 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए 3 नंबर करो। ठीक है, वेरी गुड। Ma'am, I have done 3 questions from the lab manual and 4 questions which ma'am has given. Okay. And anybody having any doubt in these questions? Yes, ma'am. मैम ये फिबोनाची सीरीज का मैम जो क्वेश्चन है उसमें अप टू n नंबर लिखा है। हाँ. अप टू दैट नंबर लाइक 5 है तो 5 नंबर तक फिबोनाची सीरीज आनी चाहिए अप टू 5 प्लेसेस। If you are using n terms means up to n terms. And suppose you have written 5, so 5 terms. So इधर मैम अप टू n लिखा है, so अप टू n नंबर आना चाहिए। up to n terms करो। Okay. मैडम इवैल्यूएशन केमति करिया सेपरेट न कले? हां सेपरेट तो करिया पड़िबो। सेपरेट करिया पड़िबो ना 10टा 20 हेलानी इवैल्यूएशन स्टार्ट करबा। करतो सेपरेट मीटिंग देखि। करिया पड़िबो। ठीक अछि मुसा लिस्ट देखि दउ छी लिस्ट कहि दउ छी। चैट बॉक्स रे लिखि दियन। हां मैं लिखि दउ छी ठीक खोली कहि दउ छी। जो लिस्ट आस्ते से लिस्ट अनुसार कहि दउ सा पार्टीशन लिस्ट आस्तिला। हेलो सर 1459। हां मैडम मोर वाला रोल नंबर 40 रु 040 रु 459। हां ठीक अछि। मीटिंग गोटे क्रिएट कर दवा। Hello students, I am giving one link, Google Meet link, and you all from roll number 0402459 to join this meeting. Okay, and your evaluation should start in every class. जसपन सर आ गोटे लिंक बनेछन्ती कि गूगल क्लासरूम रो? हां मैडम एमान को इवैल्यूएशन करिया पड़ियो कोन से मागिबे 15। हां सर भलो करले आ सर टिके तांको कहिबे आपन को लिंक रे ही से जो असाइनमेंट गुडा माने सबमिट करिवे प्रोग्राम गुडा। हां काहे कि ना माने मोठी सबमिट कला कोन लेट करछन्ती तापर सब मोरी पाखु आसुची मेल पूरा फुल हे जाउची। मैम से तो गूगल क्लासरूम में सबमिट करिवे ना? हां माने तुम माने इंडिविजुअल गूगल क्लासरूम जो बनेछो सेठी ही सबमिट करते कहिबो।
मैडम आपण जो इंडिविजुअल क्लास करिनु बनेइछन्ती हमें सेइथरे जॉइन कर देइछु ना हमें इंडिविजुअल करनु मैडम आउ इंडिविजुअल करी नाहंती जदी दया करी गोटे इंडिविजुअल करी दियंतु काहेकि पिला जो सबमिट करूचंती से तो केबे भी टाइम रे करिवेनी मोर मेल बॉक्स पूरा फुल हो जाउची हमर एमटी भी मेल डायरेक्टर पाखरु बहुत आउची बहुत कंफ्यूज होउची बुझबतले ठीक है मैडम हला सेति पई दया करी आउट गूगल क्लासरूम बने देंतु ए जो इवैल्यूएशन समय तांकु नै जिवे तांकु कहबे सेठी ही निज निज पिला सबमिट करिए फॉर एग्जांपल आपण सपोज चेक करि पालेनी गोटे थरो तो आपण लिंक रे थिले आपण आराम से चेक करिके आपण आराम से इवैल्यूएट करके दे देबे ठीक है ठीक है ठीक Student come to the link, please quickly come. I will evaluate, starting evaluation. Roll number 42459 0402 Please come to the meeting. Quickly. All of you listen or not? From roll number 0402 please come. Immediately. मैं लास्ट 3 डिजिट बोल रहा हूँ. Then from 543 to 2992 मैडम एट रही आज कर दियंतु नेक्स्ट टाइम को देखिए. ना ऑलरेडी आई हैव गिवन वन लिंक सर. अच्छा ठीक है चलिए हां मु पळे जाउ सेठी. हां मैडम एटे कहि देबे पठाई देबे. All of you please come to the my meeting 0402 मैम लिंक इज नॉट वर्किंग. चैट बॉक्स में है नॉट वर्किंग